a magician, some people call me a therapist, a mind reader, a psychic, a psychological illusionist, a therapist. And you are free to call me whatever you want, in a good way. But my basic job is to hack into people's minds, okay? Or at least give an illusion of doing so. So, let's quickly jump into it. Thank you for doing this. So, I'm assuming some of you came over, you wrote down something on a piece of paper, you folded it, you placed it inside the box. Did that happen? Yes! Very interactive performance, but then, what was it? Oh, that can be fun. Okay, so nothing up my sleeves. I don't have any paper slip. I'm going to open the box and get it into the audience. Who's going to be my first volunteer? Wow, what an encouraging Amit Shah, Amit Shah. Amit Shah. What did we say? Yes. Amit Shah. Amit Shah. Amit Shah. Okay, nothing up my sleeves. Where's Amit Shah? Okay, I'm going to wait for him. Oh, yes, you are. Okay, perfect. Now he's talking. He looks also like a winner. Yes, yes. Hello, so mix them up. There's some paper slips inside. Mix them up. Mix, pick anyone that you want. Keep it with you. मुझे बताना मत उसमें क्या है. Who's going to be the next one? Okay, so please take a page. You can take any other color. मैं भी जाऊँ. Anyone. Perfect. Keep them with you. Do not tell me what's written in them. आपके पास में आओ. उसके पहले let's check लोगों ने क्या क्या लिखा है. तो इसमें किसी ने लिखा है G-Wagon. यहाँ पे लिखा है यहाँ पे किसी ने लिखा है बेस्ट ब्रांच इंदौर. किसी ने ताली भी नहीं बजाई. Porsche 911 विवान. ओके, तो सबने बहुत अलग अलग चीजें लिखी है. एम्बिशियस. कैसी चीजें लिखी है यार. ऐसी चीज लिखो ना तो अनाउंस कर पाए. मेरे को बोलने का बहुत डिसेंट शो है. बैड हैंड राइटिंग. ओके, तो सर यू हैव अ वेब. कैन यू गिव मी माय माइक प्लीज. सर उसमें जो भी लिखा आपने पढ़ा है ऐसा मत मुझे बताना मत, पर ऐसा कुछ है जो आप बोल सकते हो माइक पे ठीक ठाक है. हाँ, सोबर. हाँ, ओके. So here's what we are going to do. We'll talk to him first, then come to you, Vinay, right? Okay. चिट्ठी पे जो whatever is written on the slip, you do not tell that to me unless and until I ask you to say it on the mic in front of the entire audience. ठीक है? You keep that word in the back of your mind. You give me 5 random words. Random. आपके मन में जो भी आता है, stage, mic, lights, balcony, कुछ भी. My job is to figure out what's written on the slip by the 5 random words Amit sir gives me. Make sense? Yes. How does it make sense? Nose करते हो क्या आप? Should not make sense, guys. Only then it's magic. Sir, आपका पहला random word क्या है? पूना. पूना. जो भी words आप मुझे दोगे उससे मुझे सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि चिट्ठी पे क्या लिखा है. मुझे आपके बारे में भी पता चलेगा. चीजें पता चलेगी. So पूरा it is. Next random word. मुंबई. जबलपुर. Delhi, Hyderabad, Chennai मत करना. Pune, Mumbai. Both are the names of places. Nothing much I get out of it. Third random word. कांदीवली. और कितना सेफ खेल रहे हैं भाई. इतना तो किस बात का डर है इनको कि मुझे पता चल जाएगा. अभी तो फ्लैट नंबर आएगा. पुणे, मुंबई, कांदिवली. देखो क्या होता है सर, देखो लोग मुझे शब्द देते हैं अलग अलग. लोग मुझे अलग अलग शब्द देते हैं, उससे मैं ऐसे मतलब अलग रख देते हैं ना. लोग ऐसा नहीं देते हैं, ठीक है. लोग अच्छे शब्द देते हैं जिससे मैं फिगर आउट करती हूँ कि अच्छा ऐसा बोला ये सोचा तो इधर तक मैं पहुँच. आपने जो शब्द दिए हैं माशाल्लाह, इससे मुझे सिर्फ महाराष्ट्र पता चलता है. ठीक है, तो देखो दिन में 2 बार ऐसा होता है जब हम ज्यादा सोच नहीं पाते. जैसा अभी आपके साथ हो रहा है. पहला जब आपको भूख लग रही है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. तो भूख लग रही है सर आपको? जी हाँ. अच्छा आपने हाँ बोला. और शायद
चिट्ठी पे जो लिखा है वो कोई खाने पीने की चीज है जिससे भूख की याद आई? वाओ तो अब एक काम करते हैं, आई जस्ट वांट यू टू से इट ऑन द माइक। फूड, फूड, बेवरेज। बेवरेज, देखो बेवरेज में कन्विक्शन नहीं था, तो इट इज अ फूड आइटम, ठीक है? तो फूड आइटम, बेवरेज उन्होंने गिव अप ही मार दिया। सर व्हाट्स योर फोर्थ रैंडम वर्ड? पर्पल, देखा अब आया ना पर्पल। अब जब आपको पता चल रहा है कि मुझे पता चल रहा है जो आप सोच रहे हो, तो आप मुझे ऐसे शब्द दे रहे हो which puts me very away from what is written on this slip. So it's something to eat which has nothing to do with purple. Okay. Also आपने जब पूना मुंबई कांदिवली बोला है, I first thought कि कोई local dish होगी, but when you say something like purple, it makes me feel it's more global. It's something that everybody would like. What's your last? It is something that everybody would like. पर्पल बोला आपने। ओके, अगर ये कोई कॉलेज इवेंट होता ना, सारे बच्चे बैठे होते सामने, तो मैं आई थिंक एक गेस मार लेती, बट दिस इज अ ऑफिस क्राउड ऑफिस क्राउड, कॉर्पोरेट इवेंट है, मैच्योर ऑडियंस, और मोस्ट ऑफ यू वुड बी वाचिंग मी फर्स्ट टाइम लाइव, so I don't think this is a moment I should take any risk. Correct. So I have something in my mind, but I will take your fifth word. मैं बस बता रही हूँ मेरे मन में क्या है, ठीक है? Will not confirm it right now. This is a fast food kind of a thing. It's not a meal. It has to be either something like noodles or a pizza or a pani puri kind of a thing. But when you say purple, I'm going to stick to PP. So it's a pizza, pani puri kind of a thing. What's your last random word? आपने smile भी कर दिया, इससे मत दो मुझे last random word. Has somebody written pizza on the slip? she's right. That's pizza. Thank you so much. Mike to Vinay sir. देखो आपको पता है क्या करना है. You know the drill. Yes. हाँ, नहीं, he is very prepared. He knows what is to be done. पर एक और प्रॉब्लम है ना विनय सर, सबको पता है मैं क्या करने वाली हूँ. एंड इन मैजिक में क्या होता है, अगर लोगों को पता है क्या होने वाला है, तो रिवर्स इंजीनियर नहीं आता कि सब मेरे साथ गेस करेंगे, ठीक है? तो अब एक बार कर सकते हो तो दूसरी बार कर ही सकते हो ना, बिग डील है, क्या है? तो अब क्या करें हम? क्या करना है? क्या करना है? कुछ ये फटफट करके 3 शब्द में कोशिश करेंगे, कोशिश, ठीक है? विनय सर आपका पहला रैंडम वर्ड क्या है? फर्स्ट रैंडम वर्ड, व्हाट इज द फर्स्ट रैंडम वर्ड? पैरेट, पैरेट, तोता। तोता, भाई विनय सर इतने प्रिपेयर्ड है अभी। ऑफ कोर्स ही इज अच्छी फ्रॉम तरह से कंप्लायंस prepared है। अभी सर जब आप और मैं बात कर रहे थे, विनय मतलब गेट तेल लेने जाए, मेरे 5 शब्दियाँ होंगी। He is that prepared right now, ठीक है? He's giving me parrot. Okay, parrot is your first word. Extremely random. It flies in the air, can fly in any order, doesn't have a direction. What's your second random word? Delhi, Delhi, Delhi. Delhi, very far from where we are right now. About to a parrot in Delhi, giving very random. आपने देखा है क्या लिखा है? हाँ ठीक है. पक्का देखा है, बिना देखे नहीं बोल रहे. हाँ? देखने के बाद आप मुझे तोते से दिल्ली दे रहे हो. What is your, मतलब सोचा 3 में करूँगी, 3 में तो नहीं हो रहा, तो let me do one more word. What's your, but it, this is very disconnect. आप बोल रहे हो कि आप just yes or no, खाली yes or no सही से बताना. जब आप मुझे शब्द दे रहे थे, you were giving me more personal words like पुणे, दिल्ली, पुणे, मुंबई, कांदिवली, एंड आप इन्फ्लुएंस हुए. You saw what you read, आप उससे इन्फ्लुएंस हुए, आप इंटरनलाइज किया और आपने मुझे अपने शब्द दिए. आपने जो देखा है, आप उससे बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हुए हो, और आप मुझे बहुत एक्सटर्नलाइज वर्ड्स दे रहे हो, एकदम रैंडमली सोचकर, ठीक है? इंटरनलाइज वर्ड्स नहीं दे रहे हो, विच नी तो यार मेरे को पैसे मिल रहे हैं, आपका एंटरटेनमेंट मिलेगा, मैं बेटी ना. तो it is not going internal, it's more external, and you're giving me absolute random. You're not influenced by what's written on the slip. तो मुझे लगा कि खाली slip है, पर आप बोल रहे हो कि नहीं, this you've read it. Yes, it's not empty slip. चिट्ठी पे, okay wait, वो खाली, there is no text on the slip. There is no text. Right. वाओ वाओ सी आई टोल्ड यू But it is not an empty slip. No, it's not empty. Which means it's a scribbling, or drawing, or signature. Yeah. Is it a signature by any chance? No. If it's not a signature, then everybody put your hands together
do it right now. अभी नहीं. I'll tell you. But before we do that, before I ask, मेरे 3 टिकट पे आपको बनाना है. अभी नहीं. उसके पहले we both will stand back to back. कितनी दूर है तेरे से लोकेशन ये? नहीं ये लोकेशन इतना ही allowed है. Okay. Before you start drawing, I want you to just think about it in your mind. ऐसे नहीं सर, आंखें बंद करो. तू कर मुझे जैसे भी होगा मुझे. Keep your eyes closed. Imagine there's this big canvas in front of you. On that canvas, you're picking up paints and drawing the same thing. Oh, you can open your eyes. 1, 2, 3. Start drawing. Now I understood. Okay, you can start. No, drawing is subjective. Doesn't have to be exact. Should just be the same thing. Okay? Are you done? Okay, on my count of 3, we show it to the audience. Their reactions will tell us if it matched. Okay, sir? 1, 2, 3, now! Thank you. Good start, good start. Now you can calm down a little bit. Okay, so this is a very interactive performance. I'm going to call a few more people on stage in a while. But before we move on to the can we have a round of applause for Ahmed sir and Meera sir, everybody? Come on. Thank you. I started performing magic from the age of 7. Like that's when I did my first ever stage show. I haven't been to school in my life. I've been to school till first standard. After the age of 7, I did not go to school because I was performing. It's been many, many years that I'm performing. We know. Now, I feel some very wise decisions were taken by my parents when I was really young. And some wise decisions even I took when I grew a little older. And my life became what you see right now. I think the same thing applies to all of us. Our life is a sum total of all the good, bad, sweet, ugly decisions we have ever made. It is because of our decisions that we are here today. I believe in the power of decision making in totality. I believe there are some people who are brave enough to take hard decisions and execute on them. And there are some people who take a long time in contemplating, discussing and figuring a decision and the right time is gone. I support the brave ones. And for that, I have the next act over here. I'm going to call 4 people from the audience on stage. These 4 people get an opportunity to make some decisions. If they are able to make all the correct decisions, it will transform their life. Not really. अच्छा लगता है मुझे. It will transform their life in a good way, but only if they take the correct decisions. Who are the 4 people going to be? No, I can't even see because there's a light on me, but I see you are raising your hand. The lady over here is raising her hand. Ma'am, can you come ahead and you can help me choose all other 3 people. So, can you throw a paper ball? You can actually go there and throw, so you can go far and wide. You can also hand it over to people left and right, however you want. Okay, so can I have you on stage if you don't mind? And as you walk up on stage, can you throw it to somebody else? Can I have you on stage, and as you walk up on stage, can you throw the paper ball to somebody else? अरे उधर से दूर पे हो. There's 1, 2, 3. Okay, so you were the first one to be chosen. I have 4 tags. 1, 2, 3, 4. Pick up anyone that you want. Number 1.